Good morning, students. Welcome back. So, let us start. Today, we are going to start the chapter 9 of our book, that is Force and Laws of Motion. In the previous class, you have studied about force. What is force? That is a pull or push which changes the position, state, direction, or shape of an object. Now in the ninth standard we will be doing little bit further, as in the previous chapter you have studied about motion. Motion of an object along a straight line. You studied about its position, velocity and acceleration. Now in this, we will study one step further, that is, which causes motion. Yes, that is the force which causes motion. मोशन का कॉज क्यों है? कोई ऑब्जेक्ट मूव क्यों करता है? जब उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई की जाती है तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? मूव करता है. You have seen tug of war, a game, tug of war, in which two teams are pulling a rope. And what happens if both the teams apply same force? What will be the result? If one team applies greater force than the another team, if one of the team applies a greater force, it pulls the other team and the rope towards itself. Two teams are applying equal force in opposite direction. So what will be the result? The rope or this hanky will not move, because the force applied by both the team is equal, so it is a balanced force. So when force is applied on two directions, equal and opposite, then it has no result. That is known as balanced force. Team is applying the force in their direction, greater force in this direction, then this force, this hanky will move towards itself, this side. So this force is known as unbalanced force. So what is unbalanced force? In which two forces which are applied having different or unequal magnitude, and in balanced force the force applied is equal magnitude. In our daily life we see that effort is required to put a stationary object into motion. किसी ऑब्जेक्ट को अगर हमने मोशन में लाना है तो हमें उसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी. कौन सी फोर्स लगानी पड़ेगी? अनबैलेंस्ड फोर्स. अगर बैलेंस्ड लगाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? ऑब्जेक्ट क्या है? मूव नहीं करेगा, वो क्या रहेगा? स्टेशनरी. और अगर हम अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएंगे तभी ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मूव करेगा. This is a box. If two persons are pushing this box in one direction, friction is applied in this direction and they are applying force in this direction, and if these two are unequal, then this box will move. If they are equal, then box will not move. So when an unbalanced force is applied on an object, then object moves. If
an object is placed on a place, it will not move unless some external force is applied on it. मीन्स कोई एक बुक है, टेबल पर पड़ी है, या एक चेयर है, आपके रूम में पड़ी है, तब तक पड़ी रहेगी जब तक आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे। वो बुक अपनी जगह पे पड़ी रहेगी, वो चेयर अपनी जगह पे पड़ी रहेगी। तो मोशन कॉज करने के लिए उसके ऊपर कौन सी फोर्स लगनी चाहिए? अनबैलेंस्ड फोर्स। Basis of this, Newton gave its first law, which states like this: Newton's first law of motion, which states a body continues to be in a state of rest or of uniform motion unless acted upon by an unbalanced external force. What does it mean? इसका मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। इफ़ इट इज़ मूविंग, इफ़ इट इज़ इन मोशन, इट विल रिमेन इन मोशन। कब तक मोशन में रहेगा या रेस्ट में रहेगा? जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। कौन सी फोर्स? अनबैलेंस्ड। क्योंकि रिज़ल्ट हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट का रिज़ल्ट, पोजीशन का चेंज का रिज़ल्ट कौन सी फोर्स से मिलता है? अनबैलेंस्ड। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट्स अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस acted upon by an unbalanced external force. Known as Newton's first law is also known as law of inertia. Let us explain or understand with the help of examples. Example, a ball. If you hit the ball moves on the ground and it keeps on moving, but it does not keep on moving forever. Why? What makes it to stop? कोई भी बॉल है, अगर वो मूव कर रही है, आप देखते हो थोड़ी देर के बाद वो क्या हो जाती है? रुक जाती है। क्यों रुकती है? क्योंकि अभी हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ डिस्कस किया। वो क्या किया कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी। तो अब ये बॉल जो है मूव करती करती अपने आप थोड़ी देर बाद रुक गई, आपने कोई फोर्स नहीं लगाई। क्यों? After some time, because some external force act on it in the opposite direction. Which external force? That is force of friction. ग्राउंड जो है इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से ये क्या कर जाती है? स्टॉप कर जाती है। Have understood that why a ball on the ground after being kicked does not keep moving forever. इसके ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट करती है? एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसकी वजह से ये क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है।